Across your reporting, you have witnessed how issues like poverty, gender, and healthcare often overlap. How do you see these intersections influencing the way medical injustice is experienced and resisted? It is the socio-economic status is a good measure to actually look at the healthcare system. And that's where investigative journalism can bring about and expose the inequalities. And as journalists, we are supposed to be watchdogs and we hold institutions accountable. We cover corruption, negligence, and inefficiencies and systemic failures. That's what our job is, and that's what we're there for. Whether we are able to do it or not is a completely different thing. But I think for the large part, हम लोग थोड़ा बहुत कर ही रहे होते हैं. For example, that ये जो आपने gender की बात की, we do a lot of the stories are covered of marginalized voices. Not just women, but also trans people. They're also, we look at them, we look at children, we look at minorities. So all of those, like, those are the people on the periphery, and they उनकी stories, उनके बारे में लिखा जाता है काफी कुछ, and especially in rural communities, underserved areas. So maternal health के बारे में, it's important to keep on talking about maternal health because we're just not making any headway. My population is on the rise. It's very sad that despite so many programs and the government taking so many initiatives, it is where it is. Um, uh, Failed family planning, wash, which is water and health and sanitation. और ये सारे, especially when there's a disaster, जैसे floods आए थे 2022 में, तो all these same issues and and the gender aspect, they become even more glaring during a disaster. Then I think that and I'll give you another example. COVID crisis है या heat wave of 2015, if few people remember. उसके अंदर again what came into more like in public glare was how overburdened and under resourced our hospitals were, public hospitals were. So all these stories keep coming keep coming up. आजकल जैसे एक staff जो issue face कर रहे हैं of salaries, उनकी delayed salaries, 4 months say they have been not been paid in one of the children's hospital in Karachi. So these are reported, but but what happens is that there's so many health issues in the healthcare system. There's so many issues that you can just touch upon and then the next day it's forgotten. So that is a problem that we face in journalism, that it's like such a huge issue of a very collapsed healthcare system that we are unable to do follow-ups, and that is why that many of the issues go under the carpet and new ones come up. Another issue which I would like to come tell you about is that policy change also comes about if the media is active. And the policy change actually comes about when media informs, educates, and makes people aware of the issue that is there. And उससे क्या होता है कि pressure build होगा. जब pressure build होता है तो policy changes आना शुरू करते होती हैं, because then the government can't ignore what people want. But it is also a double-edged sword, because if there is a good policy, it is media which can ensure that it is enforced. So वो भी काम आता है, मीडिया तभी काम आता है. But in the end, I would say that media की जो what media does is that it helps build a fairer, more just healthcare system. And that is what it should aim to do. And that is what we try to do.
But I think if there are any questions, I'll take them. But this is what I wanted to say. Thank you. Thank you, Ms. Zofeen. You have reminded us that injustice is rarely isolated and neither is resilience. Moving forward, my next question is for Mr. Atif. Mr. Atif, in many underserved areas, awareness campaigns are the first line of defense against unsafe practices. In your view, what makes a health awareness campaign truly effective at the grassroots level? Ma'am, I think that public engagement with the local community is very important as far as any kind of healthcare campaign is concerned. If you really want to create awareness in masses, then the engagement of public, particularly the notable of communities and practical steps that you can take at local level. फॉर एग्जांपल आपके इमाम मस्जिद हैं, आप उनको इंगेज करें, लोकल लीडर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको इंगेज करें। आप स्कूल टीचर्स को इंगेज करें कि वो स्कूलों में बेसिक जो हाइजीन के इश्यूज हैं इनको इनके बारे में थोड़ी आगाही दें। इसी तरह इवन क्या हमारे ईमान का ही हिस्सा है तहूर शत्रुल ईमान, कि एक मुसलमान का पर्टिकुलरली वी आर लिविंग इन ए मुस्लिम कंट्री एंड एंड इट गोज फॉर ऑल द रिलीजन्स कि सफाई जो है इट्स सेंट्रल। और मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनका अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपकी ओवरऑल जो सफाई है, क्लीनिनेस है, उसके रिलेटेड। तो सो वी नीड टू टेक small and simple steps. So we can start from the local community. Without local participation, without participation of local community, no campaign can succeed. And every campaign will succeed when local has any kind of partnership and ownership of the healthcare projects. Otherwise, they are going to fail and would not be able to reap the desired benefits. So I think that we need to, for example, as far as polio is concerned, आप इसको देख लें, जब तक हम हमारी जो रिलीजियस एलीट है उसको इसमें इंगेज नहीं करते, उनका हमारे पास व्यू पॉइंट एक क्लियरली पब्लिक को नहीं जाता, पीपल स्टिल रिफ्यूज कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। And what I did in previously, I was serving in Hyderabad. We engaged the local people, particularly the representative of local governments, Imam Masjid, even the teachers to cover the refusals. So I think people start taking part in every kind of campaign when they are involved in ownership of a particular project. So whenever a campaign fails, I utterly believe, and this is my experience, it is because people don't take ownership of that particular project. So when you are making a policy, please ensure to get on board all the stakeholders. Without making stakeholders on board, you cannot make a viable and robust campaign in your area as far as healthcare is concerned. Thank you, Mr. Atif, for that insightful response. Ms. Zafeen, my next question is for you. Yes. Ms. Zafeen, in a time when digital media is fast and attention spans are short, do you believe long-form investigative journalism still has the power to create real change in healthcare narratives? Bilkul. I believe that long form will never go out because they can long form digital. I know that everybody's in a hurry and they want to read quickly and they want to get it over with. They want to read the next news, and there is an attention deficit within all of us. But long form is something that really helps in policy making. It will help in research also eventually, because that story will not get dated, and a researcher or an academician can go back to that piece that you've written and it will help with his or her research.
इसी तरह पॉलिसी के लिए, पॉलिसी लेवल पे भी दे ऑफन यूज लॉन्ग फॉर्म जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स, एंड यू कैन सी जब वो लोग साइट करते हैं, they have read the pieces, and based on that they have, like, it's kind of an, they it has informed policy. So I don't think that, maybe for regular readers, this may not work, because we are living in a time where everything is hurried, hurried, hurried. But for some of the people, it works. And for me, it works personally because, when you're doing long form journalism, you also learn while writing about it. You learn many things. You learn about that subject. You learn more in depth, because you go into the story, you interview people, you interview experts, you come to your own conclusions also. So I think it's a great way of learning about a particular subject. Thank you. अगर आप माइंड ना करें तो मेरे एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं पूछ सकूं। मेरे ऐसे से ना, है आपको? जी जी, तो मैं यही पूछना बोलिए। चाहूंगा कि आल दो मीडिया तो ऐसा प्रेशर ग्रुप काम करता ही है, लाइक आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब मीडिया एक चीज को लाइक कवर करता है तो उससे पार्लियामेंट पे प्रेशर तो बनता है, वो लोग रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं, उसमें चेंजेस भी आती है। लेकिन क्या मीडिया सही तरीके से कवर कर रहा है या नहीं? क्योंकि जब मैं ARY लगाता हूँ तो वो कुछ और कवर कर रहा है, लाइक वो एक प्रॉपर एक पार्टी के लिए कर रहा है। जब मैं जियो न्यूज लगा रहा हूँ तो फिर वो आई गेस प्रो है, प्रो गवर्नमेंट है। अगर ARY है तो एंटी है, तो अगर समा है तो वो किसी, तो मैं किस मीडिया को देखूं? लाइक मैं इंटरनेशनल मीडिया को देखूं, मैं उनसे उम्मीद रखूं कि वो सही तरीके से और लाइक अनबाइस्ड होकर हम पर लाइक प्रॉपर कवरेज देगी, हमारे प्रॉब्लम्स पे बात करेगी। देखिए, Harris, you're absolutely right, and I agree with you. Media has its own set of problems. It has a lot of problems. हम इतने फ्री नहीं हैं, एंड हमारी जो फ्रीडम है, मीडिया का जो फ्री प्रेस है, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू इट्स इकोनॉमिक्स। अगर आपको पता हो तो बहुत सारे चैनल्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उधर कहीं ना कहीं से उनको पैसे आ रहे होते हैं। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो, एक एज यू सेड, दैट दे आर टोइंग अ सर्टेन लाइन पॉलिटिकल, उनकी अफिलिएशन आपको नजर आती है अगर आप रेगुलर उसको देखते हैं। तो वो ये बात सही है, बट there is always a balance that you can find if you do if you watch TV, and if you also read about that same the same theme। अगर आप ले लेना, देखें, कीप पॉलिटिक्स असाइड, अगर, क्योंकि हम आज अब हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में उस तरह की, आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस, and you're right, मगर उसमें मल्टीनेशनल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंड अगेन you're right that मल्टीनेशनल्स पार्लियामेंट में भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो you're absolutely right, and I agree, but there are ways of writing safely, but putting your message through there are newspapers, and there is like the newspaper जो काफी हद तक एक उन्होंने अपनी पोजीशन रखी हुई है ऑन एनी इनजस्टिसेस दैट इज हैपनिंग। तो वो अपने एडिटोरियल्स में लिखता है, ठीक है, फिर वो ऑपेड्स भी काफी दफा इस तरह से करते हैं कि ऑपेड्स, जो भी ऑपेड राइटर है, दे प्ले सेफ बट येट एबल टू से थिंग्स दैट समटाइम्स द न्यूज़पेपर कांट से। सो इस तरह थैंक भी यू, होता है। सो जी, ओके, थैंक यू सो मच। I'll आपने एक stop बात, there. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा। मैंने डॉन में ट्राई किया था, मैं द फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखता हूँ और मैं अक्सर सोशल इश्यूज पर लिखता हूँ। तो मैंने ट्रांसजेंडर पर लिखा हुआ है, जेंडर इक्वालिटी पर लिखा हुआ है, मैं आंदोलन पे बहुत काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने इन चीजों पर लिखा, उसके बाद मैं डॉन की तरफ गया तो मैंने नोट किया कि डॉन सिर्फ एक सर्टन ग्रुप को चांस देता है अपने ओपिनियन सेक्शन में, जो कि लिखते हैं उनके लिए। और अगर आप देखें तो उसमें 50% तो ऐसे लिखते हैं जैसे लगता है कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऑथर्स का, क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा। आल दो अगर आप चाहे तो मैं आपको सेशन के बाद उनके नाम बता सकता हूँ। तो लिटरली आप देख कर बता सकते हैं, ये तो चैट जीपीटी से लिखा गया है।